Okay, we start with the noise pollution then. Noise pollution is a पहला तो definition दिया हुआ है that you can learn on your own. Unpleasant sound which is not variable to the ear is what we say as sound pollution. उसके बाद they are given you the major sources of sound pollution, but also you can learn on your own. मैं से explain करने की जरूरत नहीं मुझे. Jet planes and all these things, your honking and cars and bikes and everything. Okay, right from the musical and the dandiya and garba, right from Ganesh Chaturthi से लेके कोई भी चतुर्थी होगी, नासिक ढोल वगैरह all this thing. हम सिर्फ इतना ही बाकी है कि मरने के बाद भी ऐसे कोई कम नहीं लगाता होगा तो लगाते नहीं अच्छा किशन में नहीं और एक कम्युनिटी में लगाते हैं they have a right the possession of all the बैंड मजे लेके जाते हैं हाँ कोई तो मैंने देखा है हाँ I think कोई it's a Hindu part मतलब राजस्थान कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब होगा तो मैंने अपने उल्लासनगर में देखा मैं भी सरप्राइज था उनका वो सी एवरीबॉडी हैज हिज ओन रिचुअल आप उसको ना तो आप उसको ये नहीं बोलते क्या सर ये तो सबके दुश्मन को मार के ले मैं जाऊंगा तो टीम तो ढोल के आ सकती है ये भी पॉसिबिलिटी है ओके सो या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन सन यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन सो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज इंटरफेयर्स इन कम्युनिकेशन interferes concentration of thought and disturbs peace of mind, lower efficiency of work, disturbs sleeps and lead to nervous irritability. A sudden loud sound can damage eardrum, prolonged noise can lead to deafness. Then यहाँ पे आप जो गलती करते हो lead to deafness. Prolonged exposure to the loud sound can lead to deafness. Okay. Bird life get disturbed by aircraft landing or taking off from airport. Again, mistake you do is bird life get disturbed. कौन सा डिस्टर्ब काय के लिए हुआ वो लिखी है so please mention that. Then how to minimize noise pollution? Prohibiting blowing of horns by creating no honking zones. There are two places जहाँ पे honking नहीं होता no honking zone. Hospitals and schools ये प्राइमरी दो है तीसरा वही बोल रहा हूँ ये दो जगह पे कंपल्सरी नो honking zone पर इन दोनों में से कंपल्सरी honking सबसे ज्यादा स्कूल में होती एवरी पेरेंट वांट्स टू गो अर्ली कि पहला तो एकदम गेट पे आके गाड़ी रुकाएंगे ऐसा भी नहीं कि दबाते रहते हैं दबा के रख देते छोड़ने नहीं बोल रहा पहले तो गेट पे आके गाड़ी खड़ाएंगे उसके बाद अगर मौका मिला पेरेंट्स को तो शायद गाड़ी 5th फ्लोर तक लेके जाएंगे बच्चे को साथ दवा मिल के जा बेटे उसके बाद वो पापी पी That is the most horrible. और 10th के बच्चे को करते ना तो इसके साथ सर पांडा की रेगुलर I have seen many people. क्या अजीब लगता है पर गर्ल्स के साथ समझ में आता है ना पेरेंट्स कम टू ड्रॉप बिकॉज भरोसा नहीं बॉयज का लड़कों का एक्सपीरियंस है बिकॉज उनको पता है बेकार ही हो एंड उसके ऊपर कई जन के पेरेंट्स इतने उसको ये करते हैं 10 के बच्चे को बैग उठा के ले एकदम गेट तक बैग उसको सब मेहरबानी करके चढ़ाए अगर मौका दे तो बैग भी ऊपर लेके आ जाएंगे कितना पैम्परिंग होती है ना एक लौता बच्चा होगा ना और इतना पैम्परिंग किया ना the consequences of it would be आगे जाके बिगड़ने वाला है कुछ करने वाला नहीं है बुढ़ापे में सारा तो होने वाला नहीं है पर डूबेगा माँ बाप को लेकर डूबेगा वैसे भी 2 होता तो भी डूबता ही था अच्छी बात है अपने क्लास में बहुत एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा नहीं they are the cause reason for that Next. Restriction on loudspeakers. Definitely doing right. It's okay. आगे बढ़े. Restriction on loudspeakers. Definitely doing right. Okay.
लाउड स्पीकर्स 10 o'clock तक अलाउड होते हैं बाय रूल. अपने यहाँ पे इट्स ऑल बाय रूल, वी कैन यूज बाय 1 o'clock 2 o'clock, कोई फर्क नहीं. वहाँ पे स्पेशल परमिशन चाहिए. पर मैं जैसे 35 36 में रात के 12-1 बजे तक वो तुम्हारा क्या कोई तो भजन और ये अकेला पुलिस वाले के तो वापस जिंदा नहीं आएगा. Planting trees by the roadside because trees acts as a buffer solution, a buffer part, and then not to burn firecrackers. कितने जन यहाँ पे firecrackers बंद करते हैं? एक समय सर रॉकेट फटते मतलब कितने क्लास के महान लोग हैं ना जिन्होंने जितने भी फायर क्रैकर्स कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड क्या एक एज में अपने सबको होता है, मैंने भी किया है, बट आई डोंट थिंक आफ्टर 7 या 8 के बाद मैंने कोई फायर क्रैकर सेट किया. बट जब रियलाइज हुआ नेक्स्ट इज effects of various types of pollution in that pollution affects the environment, human etc. तो वहाँ पे affects some climate and environment. सबसे पहला उसमें अपन जो पढ़ रहे हैं वो है acid rain. So what is the effect of acid rain etc. and what is the normal part? वहाँ पे लिखा है normal clean air is only slightly acidic because of some CO2 naturally present in the atmosphere due to increase, but industrialization there is lot of addition of CO2, sulfur dioxide, nitrous oxide, nitric oxide etc. For all these reasons, when the rain comes apart, along with that, this gas is mixed up and they form acid rain. पुराने जमाने में टाइम था जहाँ पे माँ बाप या पुराने जमाने वाले बोलते थे कि अब पहले बारिश में जाके नहाओ. आपकी डेट में पहली बारिश में अगर नहाओगे तो बीमार गिरोगे. Because it is completely filled with all the pollution present in the environment. Then harmful effects of acid rain damage to vegetation. सर फिर कौन से बारिश में नहाना है? घर पे शावर में नहाना अगर नहाता होगा तो. Leaking of building material and paints, erosion of ancient monuments like Taj Mahal is an example of it. Then fine particles degrade visibility and harmful effects, that is the smog and the fog effect. Then fish and other aquatic animals are harmed due to increased acidity of the water in such lakes, rivers, etc. Now why fish are affected? Because pH level of 2 hai. So the pH level after 2 so obviously speak are basically either we say them they are either in a particular water, either acidic water or alkaline water. So uske basis ke upar they would be changing the conditions, so it would be definitely getting affected. Then greenhouse effect and global warming. What is greenhouse? Greenhouse, a glass where plants are grown. Very humid so that the conditions are suitable for the plants to grow. If you are not interested, you can definitely leave the class. It's a building made up of glass where plants are grown. The air is not allowed to escape and it's very humid inside for suitable conditions for the plants. Good. Where it is normally used? Yeah, basically it is used in the cold countries or hill stations जहाँ पे climate बहुत ठंडा होता है. So where it is a glass building or basically a glass roof basically where the heat enters, the sunlight enters into the part, then the plant uses CO2, the CO2 traps the heat and it is not able to escape out. Then that effect is exactly what we say greenhouse. Usi ka carbon copy is what we say as greenhouse effect on the earth. So what is the earth? Earth is like you can say surrounding it the atmosphere is a greenhouse gas जो अपना building है. So when the sun rays enters into the earth atmosphere, it reflects back. So as it reflects back, it should go out of the atmosphere. But because the atmosphere will be filled with the gases, sulfur dioxide, carbon dioxide, methane, and many other gases, they trap this solar energy and doesn't allow to escape it out. So as a result of which the temperature of the earth increases. This is known as greenhouse effect. आपके कोई भी साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट होगा, राइट फ्रॉम 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th onwards, एनवायरनमेंट डे के ऊपर या किसी ना किसी के ऊपर
तो एक तो कंफर्म दिखाई देता है, कैसा आइसक्रीम का कोन दिखाया था उसके ऊपर अर्थ को डायग्राम में सब मेल्ट करके दिखाया। So that's exactly what greenhouse effect would be seen. क्या the earth glaciers get start melting because of the too much of temperature. अगर टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हुआ, then definitely it can melt down much of the polar cap areas, leading into a high tide and leading to tsunamis and even wiping out of the certain countries of the Southland. बहुत सारे कंट्रीज जो लो लाइंग पार्ट में वो पूरा पानी में डूब जाएंगे, okay? And that's the fear which is always there. And one of the fear which I have seen to some extent is, मेरे बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स हैं, पूछने वाले उनका अपना लॉजिक है, नवी मुंबई में खरीदने का नहीं कर, because near the Palm Beach side it can go down to what? लॉजिक सर, उनका अपना लॉजिक है, okay? But देखा जाए तो पूरा मुंबई पानी में जाएगा, कि नॉट ओनली नवी मुंबई, कि जाएगा तो पूरा मुंबई जाएगा, बट वो कब जाएगा उसके लिए टुमारो विल फाइंड का अपन रोड पे चल रहे तो गाड़ी उड़ाएंगे तो कल से चलना ही बंद करेंगे। वेट करें। So I think the greenhouse effect and global warming given over there that you can read on your own. I'm not explaining that part. उसके बाद दिया हुआ है ozone depletion. Okay, ozone hole. What is ozone hole and ozone depletion? Ozone क्या है वैसे? Yeah. What is chemically ozone? How it is formed? सर, light is falling to the oxygen and divides the Light rays. Then, in short, UV rays से ही break हो जाता है O2 into nascent oxygen O plus O. This O plus O nascent oxygen is a highly reactive molecule. So immediately it will react with another O2 to form O3. In short, जब O3 बन जाता है, which in turn stops the UV entry. So UV O3 को बनाता है और उसी को फिर stop भी कर देता है. Okay, so there itself is protected because O3 बनने के वजह से UV आगे बढ़ नहीं सकता. Now this O3 gets destroyed by पहली गलती, the O3 is not destroyed by greenhouse gases. So ये greenhouse effect अलग होता है और O3 अलग होता है. So O3 is destroyed by aerosols, CFCs, SPFCs. Yeah, methane to a direction, but not greenhouse gas. मीथेन तो थोड़ा बहुत है, पर इतना इफेक्ट नहीं है जितना CFCs, SPFCs, aerosols होते हैं. कि इनमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है डिस्ट्रॉइंग पावर में HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. CFCs are chlorofluorocarbons. Okay, how are this destroying them? O3. Sir, it separates. Like the Cl combined with CL3 releases Cl atoms, and those Cl atoms combine with the O3 to form Cl2 and O. Good. So So the O3 broke down into O2. Sir, the molecule of the atom of that displaces to Cl. हाँ, पर इसमें एक सबसे बड़ा इफेक्ट है. Okay, what you said is perfectly right. क्या O3 CFCs में chlorine gets released. It's a activated chlorine molecule. ये जाके bang हो जाएगा on the O3, which will separate out O plus O2. O जो है वो combine करेगा Cl के साथ, which is again a highly reactive molecule. ये रुकेगा नहीं वहां पे. It will again bind to another part. Again chlorine separate out and again the chain continues. तो एक Cl molecule can destroy many O3 molecules. तो ऐसा नहीं कि एक molecule एक destroy हो गया, ऐसा नहीं. So it's a chain reaction. Okay, and that is why it is more problematic. We identified this first problem in 1986.
There was a mission, Antarctica mission में कुछ scientists गए थे and they identified ozone hole over there. So what is exactly ozone hole? Depletion of ozone layer. So it is a hole. Yes, very thin. Very thin layer. Yeah. Ozone hole is not a hole basically. It is thinning of the ozone layer at that particular area is known as ozone hole. Is it improved or is it worsening? Lockdown के वजह से improved. Very good. Okay, learn. It is not because of the corona के वो improve हुआ है. वो corona के पहले ही improve हो चुका है. We are on a recovery stage of ozone, and that's because of the 1987 UNEP, United Nations Environmental Protection के वजह से we signed a protocol known as Montreal Protocol. Okay, Montreal Protocol is a protocol where 187 countries are the signatories of this part, and we are also a signatory of this protocol. But like India has also signed this protocol. The immediate effect of this protocol was 1986 के level पे जितने भी CFCs, SCFCs है, we freeze at that level. Freeze at that level मतलब जितना एक particular country use कर रहा है, up till that level it is permissible, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. That was 86 protocol. Okay. फिर the reduction was going on slowly and slowly. Reduction was given. इसमें the protocol is a very huge document. अगर आपको नेट पे मिलेगा तो सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे. It's a spread across 3 parts में, wherein they're talking about is for developed, underdeveloped, and poorly developed countries. Apart from that, phase out दिया गया है. That is phase 1, phase 2, phase 3. I think phase 3 is 2050 के आसपास जाता है. So it is not that immediate effect में दिखाई दे रहा है हमें, but yes. हम शायद फेज 1 क्रॉस कर चुके हैं, फेज 2 में आ चुके हैं, एंड द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग. आज आप कोई भी एसी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, उसके ऊपर ग्रीन लीफ का सिंबल वगैरह लिखा जाता है नहीं. स्टार इज फॉर द कंजम्पशन. द ग्रीन पार्ट वगैरह जो लीफ दिखा जाता है वहां पे इको लिखा जाता है. दैट इज बेसिकली दैट दे डू नॉट यूज एरोसॉल्स और रेडिएंट्स व्हिच आर कमिंग अंडर सीएफसी कैटेगरीज. तो हमने उस गैस को ही चेंज कर दिया, व्हिच इज नॉट अ हार्मफुल वन. So that's the immediate effect of the Montreal Protocol signed by the countries. Okay, और 50 इसके लिए because phase out हर एक के लिए possible नहीं है. 86 में जब ये protocol sign किया गया था, it was immediately effective to all developed countries. Developed countries को freeze करना था और stop करना था because they have the technology and power and money to do it immediately. Slowly the technology shifted to the developing countries like us. And then to the much poor developing countries like Africa, Nigeria, वगैरह उस category में. Then it is not कि कोई भी country immediately कोई भी stop कर सकता है, because for them shifting to a new technology is a money matter. और हर एक के पास होगा जरूरी नहीं. So we have done it successfully, and the ozone is on a recovery phase. Then, but the every side has two coin has two sides. हमने Montreal Protocol से improve किया है. But global warming improved नहीं. It has worsened in that case. So एक तरफ ने अपन ने ओजोन को स्टॉप किया है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट continues to occur and it is worse. And with these conditions, melting of glaciers would be much faster. Already the level of water has already gone up. Next. Then International Ozone Day, 16 September. Underline, fill in the blanks के लिए या MCQ के लिए ही आएगा. Then effects of human health. पहला दिया गया है air pollution, particulate lead causes blood shortage. Lead in your respiration part, obviously lead has a power to combine with the oxygen carrying capacity. उसके वजह से क्या होगा? There will be obviously blood cell shortage. It also destroys the blood cells. तो इसके लिए आपके blood cells में shortage दिखाई देगा. So your RBC count, WBC count will go down slightly. Then smoke leads to asthma and poor visibility. Then gas from H2O causes serious damage to air passages in lung. That is bronchitis, asthma, and many other diseases related to the lungs. Then water pollution can lead to several diseases like cholera, jaundice, and typhoid. 9th standard में अपन ने waterborne disease पढ़ा था, तो उसके नाम याद आ जाएंगे. Click करिए.
soil pollution can indirectly affect human health. The pesticide in agriculture may cause health problem, biomagnification as well as eutrophication. दोनों का अपना effect हो जाता है. Lastly on the food cycle में the humans are on the last part, so majorly affecting the human beings as such. Then control of pollution. How do we control them? सबसे पहला दिया हुआ है use of unleaded petrol and CNG. Then CNG full form देख विलास for 1 mark. अभी बोलने के लिए आसान है, पर पेपर में वो भी कई जन को आता नहीं. Okay, कुछ भी लिख के आ जाता है. Then switching off the automobile engine at headlights and when not in use. Then obviously ये जो book बनाया था वो पुराने जमाने का. Now you can definitely write is shifting on to alternative fuel like EV vehicles. Yes. Electronic vehicles are also available nowadays. So go on to electronic vehicles, carpools. Then यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप book का लिखो. Whatever you feel as an answer would be right can definitely be considered as the right answer. Because book को यहाँ पे refer नहीं किया जाता है, बोर्ड में directly debate होता है कौन सा आंसर को right देना है कौन सा नहीं देना. So you can write anything out of the textbook also. Okay, till the time it is right. Then installation of tall chimneys in factories and fitting them with filters and electrostatic precipitators. Electrostatic precipitator का diagram पीछे दिया हुआ है जो अपन पढ़ेंगे नहीं. 9 में था आपको सही. Then fitting industrial effluent before discharging them into water bodies. 9 में था. आपका electrostatic precipitator और एक था scrubber. Then not to throw food waste into open ground or in the drains. Not to throw food waste into open ground. Basically to recycle the food waste etc. That is ओखला खाद वगैरह वो भी 9 में था आपको. So compost and all these things can be made from it. Setting up sewage treatment plants in larger habitations and septic tank in houses. So large areas में it is possible to set sewage treatment plant. But जो small buildings होते हैं जो out of municipal areas के उसमें होते हैं तो वहाँ पे they cannot have their own septic treatment tank, the sewage treatment tank. So for them septic tanks are there. आपके गांव में अगर if it is not a proper इस one city part में तो आपके गांव में washroom के नीचे septic tank बनाया जाता है. It's a used tank जहाँ पे all goes over there. So that is the septic tank. Septic tank को regularly clean करना होता है. There are vehicles which comes to clean that. अपने यहाँ पे तो vehicles होते हैं. गाँव का साइड में इतना clean करने की जरूरत नहीं पड़ती. So they simply close that और एक नया septic tank बनाना पड़ता है. वहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस होता है जिन्हें गाँव में ये होता है क्या मेथड इस तरह का बनाया जाता है कि percolation of water goes down to soil and then it takes almost 10, 12, 15 years to completely fill that. तो 10-15 साल तक चल जाएगा. और अगर आप पनवेल के म्युनिसिपलिटीज में देखो जैसे कि नियर द नेरे साइड एंड ऑल दिस मेरा स्टेइंग तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है जहाँ पे दे आर आउट ऑफ द म्युनिसिपल लिमिट्स. तो बिल्डिंग के नीचे सेप्टिक टैंक है तो उनको 2 साल में क्लीन करना पड़ता है. So there are vehicles allowed, there are machines which are there आज के डेट में. आपके रैन के बाहर ही चालू देखो सेप्टिक टैंक का क्लीनिंग कुछ चलता है गटर का कुछ तो वैसे कुछ होता है. There are vehicles which can take care of that part ताकि it would clean the septic tank and again can be reused. Okay, because buildings वालों को हर दिन नया टैंक बनाना हर दूसरा में नया टैंक बनाना is not possible. So उनके लिए this is the option which is available. Then better use of compost and instead of chemical fertilizers use of pesticides. Recycling of plastic material, glass material and incinerator of non-recyclable waste. Planting of trees along the roadside, wasteland and mountainous slope produces soil erosion as well as improves the air quality. Okay. इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ था हर घर में धर्माधिकारी क्यों मिला था अवार्ड? वेरी गुड. सर कुछ तो किया था उन्होंने सोशल वर्क. आज का फंक्शन मिला था. He is not social worker. So the good part है. He got the prize. He got this Maharashtra Bhushan because of his eminent work in planting of trees. Across Maharashtra, he has planted lakhs and lakhs and lakhs of trees. अब अगर कभी कर्जत ब्रिज साइड जाओगे तो आपको कर्जत साइड में बहुत सारी जगह पे बोर्ड मिलेंगे धर्माधिकारी संस्थान ऑल दिस थिंग जहाँ पे आपको ट्रीज लगाए दिए जाएंगे. वहां पे उस तरफ मेजर प्लांटेशन इज डन बाय दिस फाउंडेशन, धर्माधिकारी फाउंडेशन. सो दे आर
very much highly involved in many other social work, but the biggest work is doing this, the planting of the trees on the hill slopes and the roadside, etc. So ये पूना वगैरह उस साइड में तो आपको बहुत ज्यादा इसके नाम दिखाई देंगे. इस साइड कम है, पर उस तरफ तो they are like worship as a god for over there. ये अपने आप पे दिख ही रहा था कितना क्रेज था पब्लिक का. Then वो ऑफिशियल नहीं है. Vehicular standards, Euro Bharat vehicular standards. Now I think children majorly should know what is Euro standards and BS stage, Bharat stage. Now जैसे कंप्यूटर में there are various upgradations in terms of Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Core i3, i5, all this. आपका उसी तरह in the vehicles there is something known as Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, etc. हमारे काउंटर पार्ट फॉरेन कंट्रीज में दे आर रनिंग ऑन द यूरो 6 और हम अब भी भारत 6 में आ चुके हैं. ओके, 5 स्किप किया और द काउंटर पार्ट हैज मूव्ड ऑन टू, अब वो यूरो 7 में एंटर करने की कोशिश में. देन वो यूरो 7 में एंटर करने के इसमें हम BS 6 में एंटर कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं. हाँ, द रीजन इज हमारे यहाँ पे हमने भारत स्टेज 5 को स्किप किया. फोर्सफुली इट वाज स्किप बाय द मोदी गवर्नमेंट, समथिंग व्हिच वाज डन फॉर अ बेटर पर्पस. बट इसका लॉन्ग इफेक्ट इज गुड, बट शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ लॉस भी हो रहा था इसका. Now Bharat stage is nothing but a counterpart of the Euro 1, Euro 2, Euro 3 etc. The part is then वहां पे अगर देखोगे उसके अंदर फिफ्थ लाइन में देखना, भारत से एमिशन नॉर्म्स फॉर फर्स्ट सेटअप टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द ईयर 2000. 2000 में ये स्टार्ट किया गया था and have been upgraded to BS2, BS3, BS4 norms. This norms mean that any motor vehicle on the road has to adhere to a specific emission order to reduce pollution. The emission standards are set up by the central government to check on the pollution level emitted by the vehicles. Okay, which are उसके बाद आगे लिखा है based on the European emissions based upon the Euro 4, Euro 5, Euro 6. These norms are followed by largely by automobile engineers etc. Automobile makers etc. उसके बाद और एक नीचे ईयर लिखा है देखो, emission from our place since April 2010. BS4 2010 से चालू किया गया. Okay, उसके आगे पढ़ोगे but were enforced to the entire country on 1st April 2017. 7 साल लगे उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने. Because अपने आप पे mind blowing corruption. So that is why it has to be forcefully done. The reason was simple, children. When you put these laws, BS4, BS6, BS5, whatever, then there is a huge backlash in that part. is जैसे कि उस जमाने जब ये लॉन्च किया गया था, अपने यहाँ पे अगर देखोगे जितने भी डंपिंग व्हीकल्स है या लॉरीज है या बड़े बड़े लॉरीज वगैरह होते हैं, स्पेसिफिकली म्युनिसिपैलिटी कचरे का डब्बा जो लेके जाती है, वो व्हीकल्स ही कम से कम 15-20 साल पुराने हैं. अभी जो आए हैं व्हीकल्स, द वन व्हिच आर ऑटोमेटेड, वो बटन दबाया कॉम्प्रेस करके पूरा कचरा प्रेस किया जाता है एंड देन अगेन ओपन्स. ये तो नया टेक्नोलॉजी में. पर पुराने जमाने में आई वाज योर एज, सिंपल लॉरी आती थी, कचरा डाला जाता था, वो कैरी करती थी, उसके ऊपर तरफ पे डाला जाता था और वो जैसे जाती थी सब जगह पे गिरा के जाता है. हाँ, अभी भी बहुत जगह पे यही चल रहा है, नो डाउट अबाउट. विलेज वगैरह में तो अभी भी वही चल रहा है. लेकिन ये व्हीकल्स 15-20 30 साल पुराने हैं. बिकॉज अपने यहाँ पे इंडिया में कॉमन रूल है, पहला गाड़ी खरीदा 10 साल चलाया, सेकंड है, फिर वो 5 साल चलाएगा, फिर वो किसी और को बेचे. जब तक चल रहा है जुगाड़ करके चलने दो. एंड दैट इज हाउ. और अगर नहीं चल रहा है तो गांव में भेजेंगे, बिकॉज गांव में कोई होता नहीं ट्रक जुगाड़, लोकल घुमाने के लिए काम है, तभी भी चलेगा. उसको उतना पेट्रोल चल जाएगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा काम अपना काम हो जाना. दैट्स मोर देन. इस चक्कर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ वाज नॉट पॉसिबल. अब with the advancement we understood कि pollution is harmful to us, हमने कहीं ना कहीं इसको चेंज किया है. जितने अपने प्राइवेट व्हीकल्स है, स्पेसिफिकली कार ओनर्स, उनमें तो अपन 10 साल के ऊपर नॉर्मली यूज करते ही, वेरी रेयरली. अपन क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं. जो खरीदता है टैक्सी वाला है, कोई तो खरीदेगा, थोड़ा पॉलिश विश करेगा,
वो यूज करेगा फॉर ट्रांसपोर्ट, वो पोल्यूशन ही करेगा। पर अपन बोलते हैं अपन ने तो अच्छा काम किया, अपना पुराना व्हीकल नहीं। ओके, सो गवर्नमेंट हैज गॉन वन मोर स्टेप अहेड with the implementation of BS5 को skip करके BS6. Lot of you can say there was a against that BS6 launch because बहुत loss हुआ था automobile industries को pricing के वजह से। And another important was आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट ने किया है compulsory scrapping of the vehicle after 12 years. मतलब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीन टैक्स है, ऑप्शन दिया है। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं, अपने यहाँ पे है। अभी हट जाएगा। कुछ नहीं, अपने यहाँ पे कितना पकड़ा जाता है ग्रीन टैक्स, तेरे पास है या नहीं? ये वो क्यों तेरा सीएनजी का आज के व्हीकल में सब में सीएनजी मोस्टली लगाया जाता है कि उसके ऊपर एक प्लेट होती है, पता है ना? सीएनजी व्हीकल किसके पास? जितना ट्रैवलिंग करता हूँ ना उसमें अगर मैं पेट्रोल यूज करूंगा हो गया, पूरा पेमेंट ही पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। सीएनजी के टैंक के ऊपर एक आपको ये मिल जाता है, जैसे बैच ऑन इट, उसको आपको हर 3 इयर्स के बाद अपडेट करना होता है। यू हैव टू टेस्ट द सिलेंडर ऑफ द सीएनजी। आपने टेस्ट नहीं किया तो बाय रूल आपको व्हीकल अलाउड नहीं चलाना। ऐसे कितने जन हैं जो चेक नहीं कर पैसे देके सीएनजी भरा जाए? तो ऑल थिंग्स आर डन इन देन सर ऑटो वाले अगर आपका कनेक्शन करना है और सर ऑटो वाले कम से कम मैं 2 चीजों में सेफ्टी मेंटेन करता हूँ, एक व्हीकल में और दूसरा हेलमेट में। बिकॉज ये है तो हूँ, बिकॉज आई हैव सीन मेनी एक्सीडेंट्स, दोस्त के भी देखे और खुद ने भी बहुत किए। So that's why I have stopped using my 2-wheeler. बहुत कम यूज करता हूँ, 4-wheeler is better. गवर्नमेंट कंपल्सरी किया है 2-wheeler मतलब आप कितना भी सेफ चलाओ, पीछे वाले मैं 3 बार उसी के वजह से गिरा। Next. Yeah, Kawasaki and all these things. सर वो आर्मी पे कावासाकी का देखा था दूसरी साइड से आगे बंदा उसका रास्ता अलग पर वायर पे सब दिया था। उसका रीजन है, when you are at your age वो सब में जोश होता है, ऐसा कुछ नहीं है। I also done that lot, okay, but after a gradual age, हो जाएगा। yeah, when you come into that track जहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, और उसके बाद जो इफेक्ट आता है, then you realize क्या ये करके स्पीड करके कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में जाने वाला है। तब 10 में से 8 जन को मैच्योरिटी आ जाती है, भाई अब नहीं। बाकी 2 नमूने होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हाँ गुड, मौत आनी है तो अच्छी बात है, पर माय डियर मौत आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। But when you are accident and then when you lose your hands and leg, तो मौत बदतर से भी होगा उसकी। Because then the reality goes is जब तक तेरे माँ बाप है ना आज की डेट में, तो तुझे इतना पाल रहे पोस रहे, उतना ही दिखने वाला है। The moment they go upstairs, nobody will look at you. You would be worse than a beggar. कितना भी रिलेशन होगा भाई बहन, सिर्फ मुझे नहीं, हाँ सब लोग सर मुझे नहीं, सब लोग लोगों की बात। Then next is your refineries के बाद वहाँ पे लिखा है stop the oil refinery step up the production of cleaner fuels, automobile makers make speed up research and development, BS norms against compliant by year 2020 in India. तो हम BS6 लॉन्च करने के 2 रीजन थे, एक तो पोल्यूशन दिल्ली का जो इफेक्ट था, दूसरा अपने यहाँ पे आज की डेट में वी हैव इम्प्रूव्ड आवर टेक्नोलॉजी टू अ बेटर एक्शन। अब हमारे व्हीकल स्पेसिफिकली 4-व्हीलर्स आर कॉम्पिटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आपको उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही है, वरना आपकी गाड़ी को भी पूछेगा भी। सो यू हैव टू फॉलो द BS6 नॉर्म्स फॉर द, वहां पे वो Euro 6 बन जाता है।
तो आपको वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना आपके व्हीकल्स को कोई नहीं पूछने वाला। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट, स्वच्छ भारत अभियान। मेजरली क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं विकलन, रिसेंट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ मोदी का क्रिएटिविटी। सो अरे हो गया पर कुछ काम का नहीं ना, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान पेपर पे ही दिखता है, स्वच्छ भारत अभियान। ऐसी भी दिखता है, ऐसी भी ऐसी। हाँ, सिर्फ स्कूल में दिखता है तुम्हारे वन महोत्सव ना, और बहुत कुछ, क्या जहाँ पे ऐसा सिर्फ झाड़ लगाया जाता है, बच्चे का फोटो निकला जाता है, उसके बाद then anybody is bothered क्या वो झाड़ जिंदा है, मरा है, पानी दिया है, नहीं दिया बिकॉज अपने यहाँ पे एवरीथिंग इज डन फॉर फोटोस, the reality is that only. A very simple example, स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च किया गया था तो मुझे याद है, आई वाज जब अपना पनवेल ब्रांच फंक्शनल था, पनवेल का सेकंड साइड जो अपना पहला पुराना ब्रांच था, माइंड में फर्स्ट फ्लोर पे था, पूरा रास्ता दिखाई देता था, स्वच्छ भारत अभियान का पूरा कैंपेन चल रहा था, पूरे बीजेपी और ऑल दिस थिंग्स कचरा साफ कर रहे थे वगैरह। द बेस्ट पार्ट वाज वो पूरा रोड क्लीन ही था, एंड you know observing from upstairs, वो पूरा रास्ता साफ था, people came, no some of the came, डस्टबिन में कचरे का जो अपना पेपर होता ना, सूखा कचरा पेपर ऐसे फाड़ के कचरे डब्बे में लाए होंगे, डाले, तो फिर वो सब आए, फिर वो झाड़ू से साफ कर रहे, बिकॉज दैट इज अ गुड कचरा, अपन नाले में थोड़ी उतरने वाले। तो उसके जस्ट 1 किलोमीटर आगे, जस्ट थोड़ा आगे जाओगे ना, तो वहां पे जो एक्चुअली थोड़ा स्लम एरिया टाइप है, वहां पे दुनिया भर का कचरा गंदगी है, उधर नहीं गए, okay, because this is our so called better world. Then there are only few people who can have the daring to enter. I think अभी recently जो example था वो किधर, तो महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट में कोई एक कलेक्टर है, he has entered actually into drainage, yes, along with the people to clean. Then that's the daring which I would say, because उस rank officer उसमें उतरना is cannot be thought of. Okay, see, इसमें एक चीज है, अगर वो खुद उतर सकता है ना, तो उसके पास बोलने का हक है किसी और, क्या मैं अगर कर सकता हूँ इस रैंक ऑफिसर, आप क्यों नहीं करते? And then only people also could stop doing. See, if I say something and I do not follow the instructions by my own, तो मुझे किसी को बोलने का राइट ही नहीं। Okay, so that what he did. अपने यहाँ पे ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे जो इतना कुछ कर सकते हैं। उसका पूरा न्यूज के ऊपर उसका ये दिखा रहे थे, एक्चुअल दिखा रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, where he actually went and he was trying to do it. And ऐसे नहीं है, I think वाशी में क्रिक साफ करते हैं संडे, वहां पे भी जाके देखो, people, children of your age group actually go into that creek and get the things cleaned out. अपन सोचेंगे भी नहीं, सही सर गंदी में कौन हाथ डालेगा, कर रहे, and they are highly educated people, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, they are doing that, running an NGO and they are doing this part. Then अगर करने का इरादा है तो अपन कर सकते हैं, अपन, मैं ये नहीं बोल रहा आपको क्या वो जाके करो, एक पर्सन भी आपने किया ना हेल्प, तो भी डिफरेंस क्रिएट करो, like a simple contribution from your side, not using plastic bottles, wrappers को कचरे पर डालना किधर भी, डेस्क के अंदर डाल के रखना, और किसी ने सच ही कहा है क्या, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द होम फर्स्ट। अब अगर आप खुद को इम्प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर भी इम्प्रूव होगा, और अपना लॉजिक ही अलग होता है, चैरिटी ओनली इम्प्रूव एट द फॉरेन कंट्रीज। अपना कंट्री गंदा करो चलेगा, फॉरेन कंट्री में फाइन बहुत है, वहां पे नहीं चलेगा। इंसान वही है, यहाँ पे खाया और वहां पे $5 में खा देना पड़ेगा। एटीट्यूड का मैटर होता है। नेक्स्ट,
So Swachh Bharat Abhiyan was launched on 2nd October 2014. Then what are the rules for the objectives of the campaign? So इस पे objectives point दिए 4 point उसको mark करना वो पढ़ के जाना. To clean the street roads in parts of the country, cities and towns. To eliminate open defecation, ODF full form पूछेंगे what is ODF? Open defecation. Cluster mission accountable mechanism of monitoring latrine use and to achieve efficient solid and liquid waste management system. Okay, then to establish an accountable mechanism of monitoring latrine use, etc. Open defecation में हमने कम से कम comparatively बहुत success किया. ऐसा नहीं क्या we have completely stopped open defecation, but with the government funding for creating toilets, okay, as well as picture भी था toilet equipment. It shows a lot of things क्या lot of improvement has been done. अब सारे बहुत सारे villages में भी government pays money for making your own small toilets. So that approach needs to be changed. Okay, और वो शायद picture में भी अच्छे से दिखा है. क्या वो लोटा पार्टी? Sir, Bharat toilet, sir. Bharat toilet. BTS. Apart from that, the new technologies which are coming up into that part is then अब शायद future में अपने को और भी दिखाई देंगे is we are almost on the pilot project of KVIC ने run किया हुआ attachment with the public toilets, the Khadi Village and Industrial Commission. Okay, they are doing a pilot project जहाँ पे they are taken some villages as a adoption part, जहाँ पे pilot project में all the waste which is there is connected to a biogas plant and they are generating a biogas plant, the biogas format, which would be generating electricity. Okay, if that is successful, we can do it, implement into toilets, public toilets in Mumbai, like cities, etc. जहाँ पे the electricity would help to run the toilet facilities as well as street light for 1 kilometer or so. So अपने यहाँ पे इतना waste आ जाता है कि अगर हमने ये use किया तो अपना direct dependence on the coal and the thermal power etc. will also minimize. So it's a win-win situation for us. पर वो still in a pilot project partner. Then plastic pollution, another major, you can say the most problematic part for entire world is plastic. Okay, आप किसी भी जगह देखो समुद्र से अंदर soil सब जगह पे plastic का दिखाया जाता है. Okay, marine line is affected, soil, water, everybody is affected with plastic. And यहाँ पे again our mentality would not change. सर बीच में कुछ आया था ना कि ऐसा कोई प्लास्टिक एडिबल प्लास्टिक जो पानी के साथ भी थी अभी Then everything is there, but the problem is, would you go to get that plastic which would cost you suppose 25-50 rupees a bag? My dear, I'm talking about the cost of production. अगर तू आज एक भैया के पास जाता है और एक वो कोई भी मीट या पुदीना या मिर्ची लेता है तो अपने को माइक कौन का खरीद देता है, उसका कॉस्ट कितना आएगा? मे भी उसको 1 रुपया आटा नहीं का होगा. अब वही तेली अगर तू 50 रुपए का मिल रहा होगा, जो देगा तू खरीदेगा. The things have improved पर अभी भी फर्क है. Like there are many malls etc. जहाँ पे आपको paper bag pay करना हो. Apart from that, they are charging bags price also along with it. अब उसका reason है जब पहला paper bag free मिल रहा था, बहुत सारी जगह पे paper bag free नहीं करते because आप क्या करते हो, 3 कपड़ा paper bag मिल रहा है भैया, वो 3 कपड़ा अलग अलग बैग मिल रहा है because human mentality और ऊपर से इंडियन मेंटालिटी. सो पैसा दिया है ना तो 3 बैग मिलेगा, काम आएगा. Okay, so that mentality needs to be changed. Then I understand that every time you cannot completely avoid it, but जहाँ तक basic चीज होती है वहाँ पे तो avoid करते हैं and things are improving. जैसे कि अभी और most of the time it is from the south side only improve होता है because highly educated people वहाँ पे ज्यादा है. Okay, ऐसे बहुत सारे I think एक कोई नया भैया आ रहा है. There are some food grocery shops etc. जहाँ पे they have put vessels जहाँ पे
The food grains are stored in that vessels. जैसे अपन पाइप टैप खोलते हैं और पानी आता है, वैसे ओपन किया जाता है, and you carry your vessels or bag etc. उसमें भर के लेके जाओगे. They don't give any plastic or anything. So अपना completely आपके घर के utensils लेके जाओ, open करो, get dispense into that utensils and take them at home. Okay, and so then those who are environmental freaks, I would say, they are doing it. Okay, and they are doing it efficiently. अपने यहाँ पे अपन जाते हैं, अरे कौन लेके जाएगा, बैग मिलता है ना, डीमार्ट में वो पॉलिथीन बैग मिलता है, सो अपन क्लॉथ का बैग करते हैं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक बैग जिसमें आप गेहूं चावल रैप करके फिरा रहे हो. अपन प्लास्टिक बैग को पहला पैक करते ना, उसके बाद इवन योर प्लास्टिक बॉटल्स वी आर यूजिंग, एंड देयर इज सरप्राइजिंगली बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स बैंड है. जैसे कि आई थिंक आई जस्ट नाउ वेंट टू दैट गुरु तोमार लेक, शिलोंग, ऑल दैट साइड, सन ऊपर एब्सोल्युटली क्लीन. वहां पे सिंपल रूल दे आर फॉलोड. सिटी के साइड में वाटर बॉटल मिल रहे हैं, बट टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्लास बॉटल हर जगह रहे, तो उन्होंने दिमाग लगाया. अब वहां पे किसी भी शॉप में जाओ, आपको 1 लीटर का पानी का बॉटल नहीं मिलता. इट इज आइदर 2 liters or 5 liters. देयर इज नो स्कोप ऑफ 10 वो 500 और 1 लीटर का बॉटल नहीं. प्लास्टिक का बॉटल है, पर ओनली ऑफ 2 liters और 5 liters. तो आपको मतलब 4,000 बात कम हो रहा है. दूसरा, वो सिर्फ सिटी एरिया में मिल रहा है. जैसे आप अब जाओगे टुवर्ड्स द हिली एरियाज, तो वहाँ पे वो लाचेन ऑल दिस लेक्स आर स्पॉट्स आर देयर ना, वहाँ पे जरा मिलिट्री चेकअप. अगर आपका बॉटल मिला भूले भटके से, ठीक है, तो फाइन सोचो नहीं सकते. फर्स्ट टाइम यू आर कॉट, the fine is 5,000. And then the fine is not to you, but the fine is to the driver. जो टूरिस्ट थी, you go over there tourist only. तो आप वो टूरिस्ट को फाइन मारा, ड्राइवर को. सो वहां पे टूरिज्म का एक रूल है, क्योंकि हम लोग कहते हैं वो पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, सर आपको बिस्लरी अलाउड नहीं है, यू कैन बाय सच बॉटल्स और यू कैन बाय स्टील बॉटल्स और ग्लास बॉटल. वहां पे ग्लास बॉटल मिलता है सब जगह. आगे जाके रीजन इज बिकॉज ये स्टील बॉटल महंगा है, आप फेंक के नहीं आओगे. सो वन, एंड दैट इज पर्पसफुली डन. सेकंड, पहली बार 5,000 है ड्राइवर को, दूसरी बार पकड़े गए तो ड्राइवर ने, आपका काम था आपको बोलना, आपने सुना नहीं, तो पहला उसको फाइन मिला. सेकंड टाइम पकड़ा गया तो आपके ऊपर फाइन, और अब कुछ 8 या 10,000. एक्चुअली वहां पे पुलिस वाले नहीं ना, मिलिट्री वाले. Okay, so there is a difference. तो आप सर 100 रुपए ले लो और तो वो नहीं होगा. And I don't think people do that because when वहां पे नेपाल के बाजू में, नेपाल के राइट, नेपाल के आजू बाजू में Now how do you reduce the 3 R's? Reduce, recycle and reuse. Okay, हम इसमें से कुछ एक भी कर लिया तो it's a huge part. Then problem मैं क्यों करूं? Okay, but there is something one said क्या बूंद से सागर बढ़ता है. अगर एक ने contribute किया, still it makes a huge difference. Okay, and I am not saying क्या you can do 100% contribution, but छोटा मोटा contribution तो आप कर ही सकते हैं. Okay, by stopping utilizing plastic bottles, या at least घर के नीचे जाते हो तो प्लास्टिक नहीं यूज करना, अपना बैग लेके जाओ. Okay, I try to minimize that. मैं पूरी तरह से मैं नहीं बोलता कि I am doing 100%, but yes, I try doing it by, मैं जब भी जाता हूँ मेरे घर के नीचे तो मुझको देता है, तो मैं उसको बोलता भाई इधर ही जाना, ऊपर पॉकेट में डाल दो, इधर उधर, या हाथ में लेके बोलता है
नहीं इधर ही जाना है, पहले माले या तीसरे माले बाजू की बिल्डिंग में जाना है, दे दे हाथ में लेके जाऊंगा। बोला कुछ को फर्क नहीं पड़ने वाला है, अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है क्या कुछ भी, बिकॉज सम ऑफ देम पॉइंट और कैसा ऐसा गहू हाथ में कैसे लेके जाएंगे क्या, अरे मतलब वो प्लास्टिक के बैग बैग के अंदर बैग या दूध का थैली कैरी के लेके ये तू ही कर सकता then ओके बाकी आप खुद पढ़ लेना। इसमें तुरंत एक चीज है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड में एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हाउ वुड यू मिनिमाइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है एज अ good student of the school, how would you keep your school environment clean or polluted free, or how would you minimize pollution itself? Children, वहाँ पे the answer would be in terms of switching off the electricity fans when not in use, or when you're going for PT, libraries, etc. Closing the water taps after going to the washrooms. बहुत टाइम पे वॉशरूम में टैप चालू रखा जाता है कि ऑल दैट थिंग्स। थर्ड, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत टाइम होता है कि अपन पानी पीते हैं, आधा वाटर है मैम पानी भर के आओ, जाएंगे घूम फिर के पानी फेंक के वापस नया पानी। I think for that you need to see a Marathi movie. So I think this is one reason where I can call your parents and definitely ask them that what have you taught your children. इंसल्ट तुम्हारे माँ बाप का होगा सबके सामने। इतना ईमानदार इतना बुरा मत by saying all this thing, no, you are showing what category of child you are coming. Why to say this things? But you are showing your own category. Okay, I think complete the chapter. Next lecture. Sir, we have completed second. Sir, school of photosynthesis. आपका क्या क्या हुआ ये बताओ। इसका एक्स्ट्रा लेक्चर बताओ। I cannot do regular lecture, my dear. Sir, Monday से class चल रही है सर। We are done transmission. Yes. No, transmission. So we have Transmission में photosynthesis. केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया? नहीं। तो अपने हुए क्या है फिर? Absorption. ये मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ। जेनेटिक्स। Yes. एब्जॉर्प्शन। Yes. और नीचे से कुछ भी हुआ? Pollution. इनका सिलेबस क्या है? Excluding cell. Okay. Next lecture, I'll be starting with chemical coordination in plants. Okay. Okay. A small chapter. सिर्फ आपको रट्टा मारना है, कुछ भी समझने के लिए नहीं है। समझने का पार्ट एक ही है, जो एक्सपेरिमेंट पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हो, इतना सिंपल है। पर स्टार्टिंग का पार्ट पूरा रट्टा मारना है। ओके, कैरी मार्कर्स, हाइलाइटर्स, बिकॉज इसमें हाईलाइट करने के लिए बहुत कुछ है। फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग एंड सर्टेन थिंग्स। अगर कलरफुल मार्कर लेके आओगे तो आपके लिए फायदा ही होगा, सो वो कैरी करना। After completing chemical coordination, we will do photosynthesis and then transpiration. उल्टा जाएंगे।
फोटोसिंथेसिस चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा ही पता है फिर में क्या लगता कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बुलेट ने बनाया तो किसी और ने वो सब भरने के लिए पहला तो आपका व्हीकल का चेक करके फिर आता है। दस के बाद 10 के बाद बोले हर वजह मॉडल होगा। Yes.